Well, big breaking news. Sorry to interrupt you. Big breaking news. Let me go across to Shivani. Shivani, our colleague Akanksha's inside. She tells us that the hearing for the day is over. Shivani. Well, yes, of course, here, Meghna, hearing for the day is over, and as we saw, the applications were clearly read by the judge in the district court of Varanasi. The petitions were read by them, and in fact, in all the documents related to the Gyanvapi complex were shared by the civic court to the Varanasi court of the district court, was shared by them. And before the hearing could start, the judge also went through all the documents, all the petitions, and as we saw that how the Hindu side today got a chance to start for the hearing, and they have also given their point of view with regards to the particular survey report itself. And now Vishal Singh and his team were also there inside. It is Vishal Singh and his team only, those had conducted a detailed survey and had gathered those more than thousands of photographs and hours of videos. But now when the hearing is over, as we saw, it was a very short time that was given for this particular hearing. So we understand maybe today the court will also take time to go through the other applications as well, the other pleas. Those are also filed in this particular Gyanvapi complex case. But as of now, we are expecting the courts to actually give some orders. But as of now, order has been reserved or not, it is yet to be known. But yes, hearing has been over right now. Now the Muslim side probably will be starting their side, will be sharing their point of view in the next hearing. But yet which date and what time is yet to be known. Harish, if I can come to you, everyone is hoping that it's going to be an expeditious hearing which is going to happen. In fact, there was a plea by the government council also earlier in the day that very quickly they would expect on priority some kind of order to come in from the Varanasi court. However, today, the first day, the court and the judge have taken stock of all the pleas, all the documentation, the hundreds of photographs, video evidence, and has reserved any kind of order, and the hearing for the day at least has ended within 45 days. Harish. 45 minutes, I beg your pardon. Yes, Meghna, since the media was not allowed inside the courtroom to avoid chaos and commotion, the picture will only be clear because once the lawyers come out and talk to the media, and going by keeping in view the fact that the hearing has lasted barely 45 minutes, and it looks like the judge has only heard preliminary arguments of both sides and detailed arguments. It may have been kept for another date. But we cannot. क्या होना है? पूरी सुनवाई पूरी हो गई है? नहीं, अभी फैसला रिजर्व रख लिया है? नहीं, अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। अभी इनिशियल ऑर्डर है। इस पर डिसाइड होगा क्या क्या। अच्छा, इनिशियल ऑर्डर है, इसके बाद तय होगा, कल बताएंगे। So tomorrow, and we are going to keep listening to what exactly Amit is telling us. He's speaking to the council. आगे बढ़िए, मदन मोहन जी आगे बढ़िए, दब जाएंगे Said that the hearing is not complete. Order will be coming in, but not today. Now the hearing will continue. Hindu sides are पहले क्या था कि मैंने 7-11 को करना, हाँ, क्या करना है, क्या डिसाइड करना है। पक्ष का क्या दलील था? उनका कहना था कि सारी चीजों को दरकिनार करते हुए पहले फैमिली लोगों को देख लें। पहले मैंने मेंटेनेबिलिटी की बात होनी चाहिए। पहले मुस्लिम पक्ष का ये कह रहा था, हिंदू पक्ष ने क्या दलील दी? देखें, यह विषय मात्र मेंटेबिलिटी। आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आज माननीय न्यायालय ने अपना ऑर्डर रिजर्व रखा है इस आधार पे कि आगे अब इस केस का प्रोसीजर क्या होगा, अगली तारीख सुनवाई की क्या होगी। हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दी थी कि जो कमीशन की रिपोर्ट फाइल हुई उसकी सीडी और फोटोग्राफ्स हमें प्रोवाइड की जाए, और कमीशन की रिपोर्ट जो है इस केस के रिकॉर्ड पे पढ़ी जाए ऑर्डर 7 रूल 11 की हियरिंग पे। जो विपक्षी हैं उन्होंने कहा कि ऑर्डर 7 रूल 11 की सुनवाई पहले की जाए, तो माननीय न्यायालय ने आज अपना ऑर्डर सुरक्षित रखा है और एक प्रोसीजर बनाया जाएगा जिसके तहत
अब इस मामले की सुनवाई आगे होगी और उसका फैसला कल आएगा। जजमेंट पिटिशन और कौन सी डेट पे सुना जाएगा, किस ऑर्डर में सुना जाएगा और कब अगली सुनवाई की तारीख है, ये सारी बातें कल पता चलेंगी। कोर्ट ने अपना जजमेंट आज रिजर्व सुरक्षित कर लिया। मैंने बताया तो मैंने ये बहस रखी थी कोर्ट के सामने कि ऑर्डर 26 रूल 10 के तहत जो कमीशन की रिपोर्ट वो 7-11 के साथ पढ़ी जाए। विपक्षी का ये कहना था मुस्लिम साइड का कि सिर्फ 7-11 आइसोलेशन में पढ़ा जाए, जिस पे माननीय न्यायालय ने कहा है कि हम पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके, क्योंकि ये फाइल सिविल जज से अभी ट्रांसफर होके आई है, पूरा रिकॉर्ड पेरूज करके उसके बाद हम अपना आदेश पारित करेंगे और कल आदेश के लिए लगाया है। जो भी अगली तारीख है या जो भी प्रोसीजर है वो हमें कल पता चलेगा। So there you have it. The court has reserved its order. होगी किस पर सुनवाई होना चाहिए। काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत दावा कर रहे थे उनको पूजा का अधिकार मिले। अरे भाई इसमें नहीं किए हैं, दूसरे में किए होंगे, इसमें उसका कोई प्रार्थना पत्र नहीं है। क्या हुआ है जरा विस्तार से बताया, आप लोगों का पक्ष किस तरह से मजबूत है पूरे मामले? देखिए पूरे मामले बाद सुनवाई जो हुई है, हमने जो कमीशन रिपोर्ट है, कमीशन रिपोर्ट के कॉपी मांगा है जिसमें वीडियोग्राफी, फोटो और रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट की कॉपी हम लोग को मिल गई है, वीडियोग्राफी, फोटो को नहीं मिला है। माननीय न्यायालय सिविल डिवीजन द्वारा यह आदेश किया गया था कि कमीशन पर जिसको आपत्ति हो आपत्ति दे। आपत्ति दर्ज करके क्या आपत्ति दर्ज की गई, याचिकाएं लगाई गई हैं? आज कुल कितनी याचिकाएं नहीं लगाई गई हैं? याचिका कुछ लगाई गई, प्रार्थना पत्र पहले दी गई थी। आज हमारे तरफ से प्रार्थना पत्र दिया गया। कमीशन की रिपोर्ट जो आई है उसकी वीडियोग्राफी दी जाए, कॉपी दी जाए, उसके बाद हम आपत्ति लगा तब आप सुने। सुप्रीम कोर्ट मामले पर आज क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उस पर क्या आज अदालत सुप्रीम कोर्ट के मामले पर ही न्यायालय संज्ञान लेकर के कल आदेश करेगी कि किस प्रार्थना पत्र पहले सुने। कितने बजे आदेश हो जाएगा? आदेश न्यायालय करके हाँ लगभग ही मान के लगभग 2 बजे। बताइए आज पक्ष मजबूत नजर आ रहे हैं? एकदम मजबूत है, काहे चिंता कर रही है, पूरा मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 पॉइंट बता दीजिए आप, 3 आधार क्या है? अरे अभी तो सुनवाई नहीं होता, आधार कैसे बता देंगे? पर्याप्त आधार है, मंदिर है वह। आप लोगों ने अपनी बात रखी है अंदर? पूरा बात रखा गया था। अरे जब हमने बता तो दिया कि अभी कमीशन पर कोई चर्चा हुई है? नहीं, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। अभी सिर्फ कमीशन रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट उठाने का भी इनकार किया, फव्वारे शिवलिंग का भी इनकार। आज इस पर कोई बहस नहीं हुई है। आज सिर्फ बहस हुई किस पर न्यायालय सुनेगी। आदेश नहीं आएगा, सबसे सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण दावा किस मुद्दे पर किया गया? क्योंकि 3-4 याचिकाएं लगी हुई थी। दावा तो किया गया पूजा पाठ, रख रखाव, देवी देवताओं, माँ श्रृंगार गौरी के साथ हनुमान जी, विग्रह जी, हनुमान जी, शंकर जी, गणेश जी इत्यादि का पूजा। लेकिन डीएम कहते हैं कि हमने सारी व्यवस्था की है वजू खाने को भी लेकर, तो क्या समानांतर तौर पर ये व्यवस्थाएं चलती रहेंगी? या डीएम किए हैं तो डीएम करेंगे, न्यायालय का आदेश से होगा, डीएम करते रहेंगे, जो न्यायालय आदेश कर करेंगे। ये पूजा का अधिकार मिलेगा किया जाएगा? कब तक की जाए? क्यों नहीं मिलेगा? कब तक, कब सुनवाई होगी? देखिए जब तो न्यायालय सुनती है उसको डेट। एक और चीज, क्योंकि दीवार तोड़ने की बात बार बार कही जा रही है, क्या उसकी भी चर्चा हुई थी? आज न्यायालय में दीवार तोड़ने वाले प्रार्थना पत्र या मलबा हटवाने वाले प्रार्थना पत्र पर चर्चा नहीं हुई है। आज सिर्फ कमीशन रिपोर्ट देने के लिए विपक्षी द्वारा बल दिया गया है, दावा इनका पोषी नहीं, खारिज करने के लिए चर्चा हुई है। अब माननीय न्यायालय आदेश। एक मिनट सर, क्या रहा है पहले ये बता दीजिए, क्या रहा आज कोर्ट के अंदर ये बता दीजिए सर। एक मिनट, का नहीं हुआ है अभी। चलो ना, चलो हेलो, इंटर कनेक्ट करके सुनवाई किया जाए, चूँकि पहले स्वरूप तय हो जाए कि उसकी स्वरूप क्या, नेचर क्या है उस परिसर का, उसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो है इस पे 7-11 पर सुनवाई करे। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और अपने कहा कि भाई कल जो इस पे जो हम आदेश आ जाएगा किस पे हमको सुनवाई करनी है। तो कल वो एक्चुअली ये देखेंगे कि किस पे सुनवाई हाँ, किस पे बिल्कुल माननीय नई याचिकाएं भी दाखिल किए हैं, कई लोग किए हैं, वो लोग अपना माननीय न्यायालय सुनेंगे उसको, वो उनका विषय है, हम लोग से कोई उससे लेना देना नहीं है। 1991 एक्ट को लेकर कुछ इस विषय पर चर्चा हुई क्या जी? 1991 एक्ट को लेकर कुछ चर्चा हुई आज? चर्चा अभी तो सुनवाई 7-11 रूल होगी, अभी तो सुनवाई शुरू कहाँ हुई है। अब ये कल तय होगा कि किस पे सुनवाई, प्राथमिकता किसको दिया जाए। मुस्लिम पक्ष कह रहा था कि 7-11 पे ही सुनवाई हो। हम लोगों ने कहा इंटर कनेक्ट करिए, सारे साक्ष्यों को आ जाने दीजिए, हम लोगों के पब्लिक डोमेन में हम लोगों को आ जाने दीजिए, हम लोग वीडियो देख लें, चिप देख लें, सारे फोटोग्राफी, उसके बाद ये तय हो कि स्वरूप क्या है, फिर उसके बाद दोनों को कनेक्ट करते हुए सुनवाई किया जाए। माननीय न्यायालय का कल हम बताएंगे कि किस विषय पर कल जो है सुनवाई किस पे होगी।
So that's the big breaking news which is coming in from the district court. What really happened? First, the hearing got over within 45 minutes of the clutch of petition. अरे भैया किसी का नहीं सुना गया। कल का डेट क्या बोलते हैं? कल का डेट मान नहीं रहा है। कल का आदेश देख लीजिएगा। पहले मैं किस पर सुनूंगा? पहले आपको मैं कमिश्नर की कॉपी दिवाऊं कि पहले उनका सुनूं या कल आदेश देख लीजिए। कल ये तय होगा कि जो आदेश आ गया कि कोर्ट कैसे सुनेंगे, किसको किस पक्ष को पहले सुनेंगे, वो सारी चीजें कल पक्ष को नहीं, दोनों पक्ष को सुनेंगे। किस प्रार्थना पत्र पर सुनेंगे या कल ऑर्डर करेंगे? अच्छा, और कौन कौन सी प्रार्थना? एक है कि आपके तरफ से है कि वो ऑर्डर दिया जाए। जो हमारे तरफ से बहुत सारे प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, लेकिन आज मेरा प्रार्थना पत्र का ऑर्डर दिया जाए, वो ऑर्डर की कॉपी मुझे मिल जाए। अब ऑर्डर कॉपी नहीं मिल जाए, जो कमीशन कार्रवाई हुई है उसका वीडियोग्राफी मिल जाए, फोटो हमें मिल जाए, तब मैं उसका अवलोकन कर लूँ, देख लूँ, ताकि उसको तौर पर आप उसको पेश कर सके। अरे वो तो होता ही है, पेश का कर सके, फिर उसको पुष्ट करेगी, काम अगर बढ़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हिंदू पक्ष के हैं, उन्होंने सुधीर जी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल जो कोर्ट का फैसला होगा वो काफ़ी अहम होगा। अहम इसलिए आज से होगा कि कल जज जो अपना फैसला सुनाएंगे वो तय करेंगे कि ये जो सुनवाई है, जो कौन अपना अपना पक्ष कैसे रखेंगे, किनकी कौन से पहले बात होगी। क्या मुस्लिम पक्ष ने जो कहा है कि वैधता वाली बात है, क्या पहले उनको सुना जाएगा या फिर उसके बाद हिंदू पक्ष ने जो, जैसे कि सुधीर जी ने कहा कि वो चाहते हैं कि जो वीडियोग्राफी और तमाम जो रिपोर्ट्स हैं उनको सौंपा जाए ताकि उनका अवलोकन करने के बाद वो अपना पक्ष रखें। तो कौन सी बातें पहली सुनी जाएगी, इसके बारे में कल फैसला आएगा, जब दोपहर में 2 बजे के वक्त में जो जिला जज हैं उनकी अदालत में कि आज जो सुनवाई हुई 45 मिनट की सुनवाई के बाद कल वो ये तय करेंगे कि कौन सी याचिका को सुनना है, किस लिहाज से और किसके पक्ष को सबसे पहले सुनना है। जी which are coming in. In fact, let me go across to Amir Haq also. Amir, the big breaking news which is coming in, that the hearing to decide on the way ahead is going to be held tomorrow. Till tomorrow, there's going to be no forward movement. What happened first today is that in 45 minutes, the hearing in the first day of the district court has gone over. What was discussed in it? That's the second big takeaway. The fact that there are a clutch of petitions, which one of the pleas should be heard first, to which the Muslim side said the very plea of their side, which is regarding the maintainability of the suit, should be discussed first. The Hindu side, however, are saying that it's important for them to know the details of the survey. Remember, they are claiming that they have all the photographs. However, the videography, as much as 10 to 12 hours of videography evidence, is not being made available to them, and that is what the Hindu side wants to focus upon. So what happened in the courtroom today is that the district judge has taken some more time so that he can look at all the pleas, all the documents, all the survey reports, the pictures, the videography, all of that is being looked into by the district court. Till tomorrow, the case has been adjourned, but we don't know when it is going to resume. Tomorrow, we will have clarity first on when the court is going to resume. It's expected around 2 p.m. It is expected around 2 p.m. The hearing may begin again. However, there is no clarity officially coming in from the courtroom right now. That's what the counsels are telling us. But also, which plea is going to be first looked into? And Harish, that's going to be critical. Whether it is going to be the Muslim side plea or the Hindu side plea, which is going to be first taken up by the district judge. Harish. What these lawyers have told the media after coming out, it looks like basically tomorrow the order is going to be on number 1. In fact, the judge is going to fix a timeline on how to go about with the hearing. Number 2, how much time each side will be getting, and number 3, whether it will which is a petition which it will be hearing first, whether the objections on Advocate Commissioner's report as sought by the Hindu side, or the Order 7 Rule 11 petition, that is the maintainability aspect, as being requested by the Muslim side. So these are the biggest 4 takeaways which will reflect in tomorrow's order. Number 1, whom will the judge hear first? Number 2, the timeline, as I said, as to how within the time period within which all the lawyers have to complete their argument. And number 3, the time limit each lawyers will be getting for argument. And number 4, certain objections have been raised. The Hindu side wants that the court can go ahead and hear objections on the Advocate Commissioner's report first.
Muslim, but the masjid side says the Anjuman Intizamiya Masjid wants that the court first hear the maintainability aspect, whether the petition filed by 5 women, Hindu women devotees on the maintainability of the उस पर पहले सुनवाई की जाए और यही मैंडेट है सुप्रीम कोर्ट का। उधर से बहस की गई कि साहब कमीशन की रिपोर्ट की हमको कॉपी दी जाए, हम कमीशन की रिपोर्ट को ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे और कमीशन की रिपोर्ट के लाइट में भी ये ऑर्डर 7 रूल 11 देखा जाएगा। उस पर मैंने विधि व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की दी कि ऑर्डर 7 रूल 11 के लिए केवल प्लेंट देखा जाएगा, जो उनका मुकदमा दाखिल किए हैं तो उसी को पढ़ा जाएगा, इसके लिए कोई कमीशन की ज़रूरत नहीं है। और सीधी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन पहले डिसाइड होगी। इस पर माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश पारित करने के लिए फाइल सुरक्षित कर ली है। अब ये कल के आदेश से ये हो जाएगा कि सुनवाई किस एप्लीकेशन पर होने जा रही है। ठीक है, ये कल इसकी ग्राह्यता पे तो अब माननीय द्वारा कह के हमारे हिंदू समाज को, काशी वासियों को खासकर इन पर एक हैमर मार रहे हैं, जिससे भावना आहत हो रही है। और इन सभी लोगों को जो लगातार टीवी चैनलों पे इसको फुहारा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, इन पर आईपीसी की इन 2 धाराओं के तहत 5 साल की सजा का मुकदमा कायम होना चाहिए। ये लोग आगे यहाँ बेल करावें और अपना मुकदमा लड़े। तो ये पिटीशन एक्सेप्ट होगी या फिर रिजेक्ट होगी? रिजेक्ट होगी, एक्सेप्ट होगी, शाम 4 बजे पता चलेगा। अभी बहस करें, दाखिल हो गया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग। पक्ष ने अपनी बात रखी। क्या कहा, क्या दलील दी उन्होंने? उन्होंने माननीय न्यायालय ने उनकी बात का सुनने के बाद, हमारी बातों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया। कल स्पष्ट होगा, अभी इस विषय में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, तो आपने अपनी तरफ से क्या दलील दी कि 7-11 में नहीं आएगा, इसको सुननी चाहिए, तो आपकी क्या दलील? नहीं, हमारी दलील थी, सारी बातों को हमने रखा और साथ में स्पष्ट कर दिया कि 7-11 पे इसकी ग्राह्यता पे जो इन्होंने वर्शिप एक्ट के आलोक में कहा है उसकी ग्राह्यता पे, तो माननीय न्यायालय ने उसको कल अध्ययन करेगा स्वतः और उसका फिर सुनेंगे और फिर कल शाम तक। तो कल ये भी हो सकता है कि वो जो जी आवाज़ आ रही है आपकी? तो कल जो है, जो फैसला होगा कोर्ट के आगे की प्रोसीडिंग को लेकर होगा फैसला कि कैसे आगे बढ़ेगी, या कौन से याचिका सुनेंगे और किसको सुनेंगे और किस तरह सुनेंगे, उस पर फैसला होगा। कई याचिकाएं पड़ी हैं। पहले तो हमने ये भी दिया है कि जो थोड़ा सा कार्य अपूर्ण रह गया है एडवोकेट कमीशन का, वो पूर्ण हो। और कुछ लोगों ने यहाँ पे पूजा का अधिकार मांगा है उसको, और साथ में इस मामले को जो फोटोग्राफ्स वीडियोग्राफ हैं वो हमें उपलब्ध कराए जाए, हम भी अध्ययन किए हैं। यानी वादी मुकदमा पक्ष यानी हिंदू पक्ष। मैंने यानी कि हिंदू पक्ष एक चाह रहा है कि जो वीडियोग्राफी और जो रिपोर्ट्स है वो आप लोग को दिया जाए, ताकि उस हिसाब से फिर आप तैयारी करें, अपना पक्ष अध्ययन करेंगे, तभी तो उसका समुचित जवाब देंगे। अच्छा, तो यानी कि 7 ऑर्डर 11 जो वाला है वो उसकी तरह से भी फैसला हो सकता है कि पहले उसको सुन सकती है? ये अब माननीय न्यायालय के विवेक का विषय है, वो किस पे सुनना चाहते हैं। अच्छा, ये विवेक के ये जज के विवेक पर है कि वो पहले क्या सुनना चाहते हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें, जैसे कि उन्होंने कहा कि जो कई याचिका 16 तारीख से आज तक लगातार इस पर गलत बयानबाजी दे रहे हैं। ये जो MP MLA हैं, जो जिम्मेदार आदमी हैं, माननीय अखिलेश यादव जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और MP भी रहे हैं, MLA भी हैं, इन लोगों द्वारा इस तरह से गलत प्रचार करने पर काशीवासी के हृदय पर जो कुठाराघात हो रहा है, जो धार्मिक भावनाओं ठेस हो रहा है, उसमें IPC की धारा 505(2) और 153(a)(2) इसमें ये साफ कहा गया है कि किसी धार्मिक भावना ठेस पहुंचाएगा तो 5 साल सजा का दंड का भागी होगा। उसके तहत हमने एक दाखिल किया, उसको सुनवाई हुई 45 मिनट, उसके बाद वो कोर्ट ऑर्डर में सुरक्षित रखा है। आप FIR किसके खिलाफ चाहते हैं? 150 नहीं, जिन लोगों ने किया, 2000 लोग। देखिए, हमारा नाम है, पहले वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, इंतजामिया कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, मौलाना अब्दुल वागी प्रेसिडेंट, मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी सेक्रेटरी, सैयद मोहम्मद यासीन जॉइंट सेक्रेटरी, असद ओवैसी अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस मुसलमीन, अकरबुद्दीन ओवैसी जो उनके विधायक भाई हैं, अखिलेश सिंह यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, और इनके सभी पदाधिकारी, और एक यूसुफ खान नाम का है वहाँ पे एक व्यक्ति और जो अपने आप को एक्टिविस्ट बोलता है,
और 2000 लोग हैं जिनके सीसीटीवी कैमरे था, जिनके फोटो आए थे। जो 9 लोगों के खिलाफ आप चाहते हैं, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और ओवैसी भी हैं। ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों भाई। ठीक है, तो इसमें हेयरिंग में क्या हुआ आज? हेयरिंग में होने बाद सुरक्षित गई है ऑर्डर के लिए। शाम को 4 बजे ऑर्डर निकलेगा तो उसकी सूचना आप लोग दे दी जाएगी। धन्यवाद। ठीक है सर, आ रहा हूँ, फोटो लेना सर। So several reactions that have been coming in. The order has been reserved on what next. Remember, a slew of petitions have been filed. The Muslim side, that is the mosque committee's petition, is on the maintainability of the Hindu side. We have Amir Haq who's joining us. He's been reporting on the ground to get us more details on what exactly it is that can be expected. Shivani is also joining us. But Amir, to you first, to further dissect what the court has said. As of now, the order has been reserved, which means the suspense is going to continue. But the court really is going to decide on what is the petition it will be taking up first. Well, absolutely, Pratibha. You see, even the Supreme Court has acknowledged in its last hearing that this is a complex and very, very sensitive issue, and therefore it does seem that the district judge court is also giving that much time to each of the petitioners, each of the sides, so as to decide the order in which these petitions have to be heard, and also the fact that the Muslim side's main prayer is that the very maintainability of this particular petition from the Hindu side is under question. So the district judge seems to have conducted only a preliminary hearing wherein he has heard preliminary arguments from both sides, the Hindu side as well as the Muslim side, and tomorrow, in his order, he's going to give forward a timeline as well as a list of priority that has to be accorded to each of the case. Whether he starts hearing only the Order 7 Rule 11 part that pertains to the Places of Worship Act's applicability to this entire case, or whether he hears concurrently all such petitions that have been filed from the Hindu side as well. And this is, the main prayer from the Hindu side, that their petitions should also be heard along with the Muslim petition that seeks quashing of the case. So clearly the kind of seriousness that should be attached to this entire case is being attached by the district judge court here. Therefore, the court seems to be moving slowly, giving time to each of the side to put forward their arguments and contentions as far as this entire case is concerned. And once the list of priority is decided, each of the case will then be taken up. Now, the basic difference which I believe will happen tomorrow, whether the Places of Worship Act applicability is only heard, this is the prayer from the Muslim side, or other petitions from the Hindu side are also heard concurrently along with the contention raised by the Muslim side on the Places of Worship Act. So, this will decide the future course of action within the district judge court, and therefore tomorrow's order is going to be very, very crucial regarding the entire Gyanvapi case. All right, legal editor Harish is also joining us. But Shivani, as the Supreme Court had taken up the hearing, one observation that it made was the complexity of the entire issue. That's something that the Supreme Court had also acknowledged. So now on ground, of course, the Supreme Court's interim orders are going to continue for 8 weeks. All eyes continue to be on what the court says. Is there any word on when the next hearing is going to be? So that we were discussing only, Meghna, that how Supreme Court's observation and order is going to impact the district court order, and that is why we see that the time has been taken by the court to decide that on what pace the hearing will take about the Gyanvapi complex matter particularly, and also as they have heard all the application, they have gone through all the petitions, all the petitioner, in fact, the 4 of those women have also argued that they should also be given the CDs, the photographs, and apart from those survey copies. So of course tomorrow is a time when the next date will be given. Definitely tomorrow is going to be time where the court will be deciding whether the first hearing they will take place, which is against the survey which is conducted by the commissioner. That is what the Muslim side is saying on the surveys, and also they can just go on the maintainability of the suit that has been filed. So of course tomorrow's date is going to be something where we will get a clear picture as to what the court will be deciding and what pace the Varanasi district court will be hearing this particular matter. With respect to
all the petition and with respect to the mintability and the suits that have been filed by both the sides. But of course, all eyes on the court for tomorrow as of now. Right, Harish, so, from the Hindu side, and in the petition that would be decided as well, there are questions coming in from both sides. On one hand, we have the Hindu side that wants access not just to the area, but they have also put forward a few petitions. On the other hand, the mosque side is saying on priority, what the court should look at is the maintainability of what the Hindu... और इसमें आगे क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये माननीय न्यायालय कल उसमें अपना ऑर्डर पास करेगा. अगली सुनवाई की डेट क्या होगी, ये भी कल पता चलेगा. जजमेंट कल कितने बजे होगा, ये कोई नहीं बता सकता. All right, Harish, coming back to you now. So the reaction coming in, and the lawyer also saying what time exactly tomorrow we don't know, but they're expecting to hear from the court finally on the plea that has been filed from both sides. Yes, going by what has happened today, the fight has been on what issue the court will be hearing. While the Hindu side maintained that there are other preliminary issues the court must take up before the issue of maintainability, the Hindu side has said that first the court should decide on the plea for getting all the 15,500 photos and 10 hours of video footage. Number two, not only the commissioner's report, they also want orders on several other issues they have raised, like permission to seek the demolition of the wall behind the Wazukhana, and also certain other issues. They are saying that this is very important for them to defend the suit while the hearing happens for the issue of maintainability. But at the same time, the Anjuman Intizamiya Masjid insists that as per the direction of the Supreme Court, the district judge first clears out, settle the issue of maintainability, whether the suit filed by the 5 women petitioners, Hindu devotees, is maintainable, because they argue that it is violative and counter to the Places of Worship Act, which maintaining the status quo as on religious places as on 15th August 1947. So tomorrow the order will be out as to number one, what is the timeline? How will the court go ahead with the hearing? Court will establish a procedure. Number two, which petition will the court first hear? Number three, whether the Hindu side will get the copies of the 1,500 photos and the 10 hours of video footage they have been demanding. Remember, till now officially the Hindu side has only got copies of the Advocate Commissioner's report, but the advocates Harishankar Jain and Vishnu Jain argues that this is not sufficient for them to defend, while the argument on the maintainability of the petition filed by 5 women petitioners will commence in the court. So in a way, the issues the court has taken for pronouncing the judgment are also very important. Once again, all eyes will be on the court tomorrow on while it issues orders on these preliminary issues. Okay, all right. So what's expected from the court tomorrow? We're getting those details for you. But Ashwini Dubey as well as Advocate Kapil Madan also join us on the broadcast. Mr. Dubey, now that the court has heard both sides as of now, tomorrow on what's the way forward, the court will be deciding on that. So all eyes are going to be on what the court has said. First, the Supreme Court saying, yes, there is a lot of complexity in the case, sending it back to the Varanasi District Court. Now that the court is deciding, we will be looking at all the developments. So